जो पब्लिक पॉलिसी है that is meant to be for the public, it's meant to reflect the needs and the priorities of the public. तो वो प्रो पुअर, क्योंकि गरीबों की इसमें अब तादाद ज़्यादा है इस मुल्क के अंदर, 60 से 70% आबादी जो है वो गरीब है, इसलिए जो पॉलिसी का एक मोटिव होना चाहिए, जो पॉलिसी की मोटिवेशन होनी चाहिए और उसका फोकस होना चाहिए, वो प्रो पुअर होना चाहिए। अगर शुगर इंडस्ट्री में देखें तो पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट हैं इन द शुगर इंडस्ट्री, एंड सो दैट अलाइनमेंट ऑफ इंसेंटिव्स इज देयर, एंड वी सी सर्टेन काइंड्स ऑफ पॉलिसीज बीइंग मेड दैट रिफ्लेक्ट दैट। Our public policy is deep rooted in political manifestos, political economy, a very stereotyped bureaucratic approach. And the problem is that when we devise multiple pillars of our public policy dimensions, we are not able to come up with a tangible theory of change. The voice of our citizens is not equal. All our citizens don't have an equal voice, and I mean that both in terms of their access to be heard and also in terms of the amplification their voices receive in policy circles. आप कहे तो जो मर्जी लें कि जी अच्छा ये गुरु हमने जो अपनी पॉलिसी बनाई है वो प्रो पुअर है, वो गरीबों को फ़ायदा देगी, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में उसको गरीब उससे फ़ायदा नहीं हासिल कर पाते। अच्छा, ये भी कोई अनहोनी सूरत हाल नहीं है, पूरी दुनिया में होता है, लेकिन पूरी दुनिया में इसका तोड़ क्या है कि अमीर लोग जो हैं फिर अपनी इनकम को टैक्स कर लेते हैं और वो गरीबों के लिए एक वेलफेयर सिस्टम जो है, जिनके पास नहीं है, जिनकी मदद की ज़रूरत है, उसके लिए एक वेलफेयर सिस्टम। सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी की ओरिएंटेशन ये क्यों नहीं हो सकती कि हम के गरीब अमीर लोग खुद अपने आप को टैक्स कर लें? ये कोई अनहोनी सी बात नहीं है, दुनिया में बेशुमार ममालिक में इसमें काम हुआ है। Thank you, Meena. Assalamu alaikum, everybody. Khush Amdeed. Thank you very much for being present here with us today for this session on policy, the public, and economic disorder. My thanks to PIDE for putting together this wonderful event where we can have these conversations. हम इन चीज़ों के बारे में गुफ्तगू कर सकें, and hopefully we learn something from our panelists today. I am sure we will learn something from our panelists today. Dr. Fariha Armagan is at STPI. She is a senior research fellow, and she's the head of the Center of Evidence Action Research. Her area is financial inclusion and evidence-based policy. और इनका बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी एक्सपीरियंस है, and she also has experience working in the public sector, working with international developmental partners. Fahad Ali जो हैं, he is an assistant professor at ITU. He has also been assistant professor at Habib previously. और इनका काम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, इकोनॉमिक हिस्ट्री पे, and he looks at these things from a political economy angle. And he also has a new book out as a co-editor on politics, economy and society, essays on Pakistan and beyond. This is out through Folio Books. Please do check out this book. Nazish Afraz is a colleague at LUMS, and she's a program economist for this FCDO seed program. Or she's also affiliated with the CDPR and has over 20 years of experience of teaching and conducting research to support evidence-based policy design. The idea of the panel is that we talk about the relationship between policy and the public in the present situation of economic disorder, जहाँ पर monetary side पे भी हमें disorder नज़र आता है, fiscal side पे भी disorder नज़र आता है। क्या हम इन हालात में policy को पब्लिक पॉलिसी कह सकते हैं? क्या पॉलिसी का किरदार अभी भी एक पब्लिक किरदार है? एंड इन व्हाट वे इज़ इट अ पब्लिक कैरेक्टर? इफ़ इट इज़ सो, इफ़ इट इज़ नॉट पब्लिक, देन व्हाट इज़ द कैरेक्टर of this policy in the country, and what can policy be for the country, and what can't it be, and what should or shouldn't it be for the people of the country? What can the public expect policy to be? So I just do not want to take up too much time, and Nazish, if you will please begin. Thank you. Ji, Assalamu alaikum, and thank you so much, Daniel, for that. So since I'm going first, I'll do a bit of framework setting and contextualizing where we are at, and so I want to talk about what should the role between the public and public policy be first, and then theoretically वो क्या है, and then de facto हमें क्या नज़र आता है, and then we can talk about why that deviation has happened and how it should be.
So, जो public policy है, that is meant to be for the public. It's meant to reflect the needs and the priorities of the public. And जो जिस तरह हमारी जमहूरियत है, उसके अंदर हम लोग अपनी needs and priorities कैसे communicate करते हैं? We elect those politicians in which best represent our needs, and then the situation plays out, and then in the next election year, the next election cycle, if they have met their promises, then we re-elect them, and otherwise not. So that's the theory of it, all roses and rainbows and so on. But de facto हमें नज़र आता है कि that is not the case, right? And उसके symptoms we don't need to look too hard. अगर हम लोग सिर्फ हम अपने human development के sectors ही देख लें, so 23 million children out of school, 40% of children under 5 are stunted. So, clearly the needs of the public are really not being met by our policies and our systems. So, ये जो एक loop है of articulating your priorities and holding politicians accountable for them, somewhere there is a disconnect that's happened. And in 10 minutes हैं, तो I'm not going to try to be comprehensive here about the fault lines. मैं जो मेरे लिए एक दो interesting है, मैं उनके ऊपर ज़्यादा जोर दूँगी, and then I'm sure that I would like to have a very open discussion on it. So just food for thought. जो पहली fault line है, which I think is interesting, is that the voice of our citizens is not equal. All our citizens don't have an equal voice, and I mean that both in terms of their access to be heard and also in terms of the amplification their voices receive in policy circles. So certain kinds of voices where there is a better alignment of the private incentives of bureaucrats and politicians with the voices that the group that's articulating the voices, those experience a kind of resonance, and those voices get amplified. और example अगर आप sugar industry में देखें, तो politicians के interests हैं in the sugar industry, and so that alignment of incentives is there, and we see certain kinds of policies being made that reflect that. Land reform की अगर हम लोग बात करते हैं, उधर that alignment actually is in the opposite direction, it's misaligned, so we don't see that kind of amplification of those voices happening. वो equal voice नहीं है. And in my work, I look at industrial development, and I look at how firms grow. Why do they grow? Why do they not grow? And so on. और उसके अंदर काफ़ी सारा हम लोग का काम होता है on private-public dialogues, on transmitting that voice of businesses to government and making sure that government has their pulse on the private sector. And I want to share with you two refrains that I hear from the private sector in my engagement with them. पहली तो refrain ये है leave us alone. Okay, so there is that leave us alone club, and that leave us alone club is mostly people which belong to new sectors. So for example, पहले fintech था, अब circular economy है, और उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि we want to stay under the radar, please don't do anything for us. हम लोग बिल्कुल नज़र में नहीं आना चाह रहे. Let the business model play out, let us figure out how to do it. Once the government notices us, आ जाएंगी inadequate regulations, आ जाएंगी rent seeking and harassment, so we would rather not. The second refrain that I hear very often is what did you do about the last things we told you? ठीक है, अब ये भी एक बड़ा strong club है, and there is a lot of frustration in those people, because ad nauseum they've been repeating what needs to be done. हर दफ़ा उनसे पूछा जाता है कि क्या मसाइल हैं, और वो सब कुछ बताते हैं, और वो कंसल्टेंट्स वो रिपोर्टें लिखते हैं, रिपोर्ट्स शेल्फ भर जाते हैं, कोई कमी नहीं है, we know very well, but their voice has not received any amplification or any sort of impact, and it's a very frustrating situation to be in, right? So जो हमारे सुने गए sectors हैं, उधर आपको energy subsidies भी मिल जाती हैं, उनमें आपको export subsidies भी मिल जाती हैं, और जो हमारे less favorite या less alignment है वो नहीं है. So that's the first thing I think where the link, जब ये inequality होती है, तो that link between your public and public policy gets disconnected. The second set of things that I want to talk about, and I'm going to call it immediatism. There is a kind of immediatism that has happened, which is not even short termism, ये उससे भी ज़्यादा short term है, ये जो immediatism है.
एंड इसको हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल इन दी जब इलेक्शन का हमारा साल आता है तो उसके अंदर भी सॉरी उसके अंदर हम लोग बिल्कुल एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, a very very reactive mode के अंदर चले जाते हैं, although we are in that mode even otherwise, but in the election year becomes even more prominent because we end up giving out those treats which we don't have the budget for, right? So fuel की subsidy हमने दे दी, immediate feel good feeling होगी, but we're doing it by taking on unsustainable levels of debt. We are taking loans from the private sector and from the private banks, and we're crowding out the private sector in doing that. That's the investment that we need in the long term. So in a very sort of perverse way, जब public का एक priority बनती है तो that actually the kind of things that are done are more damaging for that public in the long run, right? It's almost as if कि आपने उस वक्त एक बच्चे को आइसक्रीम खिला दी and this you feel really good, but then you walk off and you leave it to somebody else to deal with the cavities and the sugar rush and so on, right? Because इसके अंदर एक gap भी आ जाता है. There is, between the cause and effect, there is a gap. One person gets the instant gratification and the other person comes in, and as soon as they come into government, they realize, bang, reality check, there's no money to do anything, right? So वो gap भी problematic है. और ये जो immediatism है इसके another quick example is कि जैसा import की restrictions लगी, अब वो import की restrictions immediately तो एक problem को लगता है कि situation थोड़ी बहुत manage हो गई है, but even in the short term those imports are inputs into our exporting sector, so that actually exacerbates our balance of payments crisis. It doesn't really solve anything. एंड सिमिलरली भी पिछली वाला सेशन था तो उससे मुझे टैक्स का भी ख्याल आया कि हम लोग जब टैक्स का प्रेशर आता है, रेवेन्यू कलेक्शन का प्रेशर आता है, तो द ईजीएस्ट पीपल, द सिटिंग डक्स आर योर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स, राइट? आप उन्हीं को ही स्क्वीज़ कर दें एंड या तो टैक्स रेट बढ़ाएं या वट एवर थ्रू वेरियस मीन्स, बट व्हेन यू डू दैट यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉन्ग टर्म डैमेज फॉर योर रियल ऑब्जेक्टिव्स विच आर टू एक्सपैंड द टैक्स बेस. जब आपका इतना प्रेडेटरी किस्म का एनवायरनमेंट होगा तो firms then don't want to register with FPR. They don't want to formalize. In fact, many firms have told me we don't want to grow. It's और हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में आप जब firms की growth देखें that even after 20-30 years many of them have not grown the way that even in other developing countries जिनके साथ अगर हम लोग benchmark करें, where is our global firm that has come out of Pakistan, right? That doesn't happen. So that's the second, I think, cause of the fault line between the public and public policy कि वो जब हम लोग short term instant gratification की तरफ जाते हैं. और अगेन दूसरा जो एक मसला है कि जब आपको लगता है कि आपके इलेक्शंस मैनेज्ड हैं एंड यू डोंट हैव दैट वॉइस, फिर आपका इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन भी कम हो जाती है. आर वोटर टर्न आउट इज़ अराउंड 45%. Global average is 75%. So and we are one of the worst countries in terms of voter turnout. So वो disengagement है, plus local government centralization of power, corruption. As I said, I'm not going to try to be comprehensive. अब ये जो situation है जिसकी मैंने भी बात की है, this disconnect, this is there before even the economic disorder that we are meant to be talking about, right? So एक बहुत हमारी compromise space है. अब उसके ऊपर आप ले आए this economic disorder, तो it is squeezed even further. I don't want to say too much more about that, but I do want to say कि जब आपकी इस तरह की conditions होती हैं तो the role of the public actually becomes even more important. Because without social protection mechanisms under this kind of hyperinflationary environment, those are not optional anymore. That is in fact imperative. That has to be front center stage, our social protection, right? Because otherwise तो हमने बिल्कुल अपनी जो basic commitment है अपने लोगों की, हमने उसको भी बिल्कुल रद्द कर दिए. So अब मैंने बड़ी कोशिश की दानियाल कि मैं कुछ positive चीज़ें सोच कर, but I failed. So I'm going to end here and hopefully we will together come up with something more positive. Thank you. That's wonderful, Nazish. Thank you so much. Dr. Freeha, if you could please talk about the public policy paradigm and what it is, what it should be. Looking forward to hearing from you. Sure. Thank you very much, Daniel. And I'm afraid I'm going to actually start on the same note and continue.
So actually our public policy paradigm, if I clearly put it in a layman language, it's displaced from reality. Or if I put it technically, it lacks the lens of evidence. We lack an evidence-based policy design in our public policy frameworks. And our public policy is deep-rooted in political manifestos, political economy, a very stereotype bureaucratic approach. And the problem is that when we devise multiple pillars of our public policy dimensions, we are not able to come up with a tangible theory of change. We lack this theory of change, which is tangible, which is concrete, and this is where we lose our trajectory. This is where our public policy becomes fragile. And what is the importance of theory of change? This is where we actually map a policy or a program from point A to right towards its destination, that what will be the intended outcomes, how we want to frame the policy, what will be the gains on the way, and how we will consolidate the gains over time. So what happens is that for a tangible theory of change for any policy or any program, we need to take a deep dive into theoretical frameworks. We have to integrate it with data. We have to actually it should be very highly contextualized. Again, we have to factor in political economy, and then we also need to construct counterfactual, like what would be the outcomes if the policy or the program would not have been there in the first place. So this is a holistic public policy design, or a holistic theory of change, which is direly needed in our public policy systems. And what happens is that when we have a very fragile theory of change for our public policy, we actually start an intervention, we gain some outcomes, but then everything goes into a public policy black box. And we are not sure, and only God knows that what will come out of that, what will be the outputs generated, what would be the impact. So this is one of the loopholes that we are having. And again, another problem that we are actually experiencing for past few decades in our public policy paradigm is that we have been, in our result-based metrics, we have been confusing the output with our impact. So just few years ago, at my last workplace, one of my colleagues had the opportunity to launch a phase 2 of a public sector development project. And just out of curiosity, I asked my colleague that what's the reason behind it, or what motivated the ministry to launch the phase 2. And the response I got was that if you go into the basement, there's a room full of 36,000 applications. So this program is very much in demand, and that's why we are going to launch a program for around 14 billion PKR. So this is where we are going wrong. I mean, we are not quantifying the impact. We are confusing output with the impact. For example, there's a higher ed program, and 1,000 postdocs go abroad. So this is the intervention. And they complete their program. This is kind of an output. But the real impact is that how much they have contributed to R&D, how much have they contributed to ACE level of publications, or how much that has actually contributed to GDP by the end of the day. So we are confusing noise with the impact, whereas impact is very much quantified. It comes with indicator. It actually is it's a real judge of the situation, whether an intervention must be launched or not, it's workable or not, where the benefits outweigh the cost. So this design is missing, and it's even, I have come across many documents or PC1s which are based on sweeping statements as narrative. So this is one problem that we are experiencing. Another problem is that I can give you examples of how this evidence-based lens is missing in our multiple domains. For example, if we talk about, Nazish talked about education. If we talk about education, so our main stress is on enrollment rate, primary enrollment rate, secondary enrollment rate, tertiary enrollment rate. Again, we have a very huge objective of increasing our tertiary enrollment rate to millions in coming 5 years. And we, like, if you see the data, we seem quite successful in that, in pulling off that enrollment rate. But then the ACER household survey, or annual statistics education report survey, it gives you the other side of the story. It tells you how a student, a 5th grader in Pakistan, is actually having learning levels of a 2nd grader or a 3rd grader. Or even you can look at the gravity of situation
when the ASA report tells you that 29% of 10-year-old in Pakistan who are actually studying in grade 4 and 5, they cannot do a single digit addition or subtraction. Now look at the gravity of the situation. When I say single digit addition or subtraction, I mean subtracting any number from 0 to 9 out of 9, or adding any number from 0 to 9. So this is the evidence, the ground evidence that is coming in, and this is where we are displaced from reality, and this is where we need to integrate data and evidence together into our policy making. Again, so I'm just coming from a field in KPK, a social protection field, and I was having a focus group discussion with social protection beneficiaries. And it's always disappointing whenever I go to field, I come back more depressed that the work on gender, it must have been done decades ago. I was interviewing disempowered women who were totally illiterate, not able to read or write, and totally looking at this lifeline of this cash transfer for their survival. And all their concern was that from the last tranche, they were able to pay the electricity bill, and they were all like looking towards the next tranche for paying the electricity bill. So I mean, this is not what is the purpose of the social protection. Social protection is meant for their consumption smoothing, for a bit of relief in their lifestyle, not just like submitting these electricity bills. So again, in gender indexes, if you see, in all the indexes we are failing. There was a very apt seminar yesterday, the invisible 50%, I would rather say the forgotten 50%. So this is the many other domains, an example where I can talk about this. And again, we also have this approach that we are not able to tackle the coming crisis, even the long gone crisis, or even not in a position to factor in these crises in our public policy regime. For example, there's this hard evidence that the climate change or climate action, for climate change and climate action, women are the point of intervention, women are the point of leverage. This hard evidence has been existing for the past 15 years, every time we see floods, but we are not able to put up a single community-based model of adaptation or mitigation to showcase it to the world, to showcase at COP that we can actually remodel a certain community with all the intervention, with all the rigor of the climate change, and we can actually show what interventions are workable in South Asia or in Pakistan or not. And again, if I talk about inequality, again, we are not able to tackle it. It's a very ugly and stark inequality that Pakistan is facing. If you see even the policies, there's hardly any concept of distributive justice. And now we are actually entering climate inequality, but we are lagging so behind that we are not able to even tackle the income inequality. So these are the challenges we face, where we have to actually come out of this approach of deer in the headlights, where we become freeze in time, and we're not able to handle it at the right point in time, how to factor it into policy making, how to actually have a forecasting or a trajectory for future in terms of policy making. 20 years ago, I read a book by George Orwell, Animal Farm, and it had a quote that all animals are equal, but some animals are more equal than others. So if you see your taxation policy, you see number of other policies, they are actually favorable to certain segments of society. They are actually creating a win-win situation for particular segments of society, and there's not a convergence for the economically disadvantaged or for larger segments. So this is one of the aspects that evidence-based policy design must be present. It must be highly contextualized, and we need to factor this in. Thank you, Dr. Freya. Fahad, perhaps you can give us your remarks now. Thank you, Daniel, for this, for actually organizing this panel and for inviting me. I think मिस नाज़िर शफराज ने और डॉक्टर फरिया ने बहुत अच्छा फ्रेमवर्क सेट कर दिया, एंड आई जस्ट वांट टू आई हैव अ लिटिल बिट टू ऐड टू इट hopefully, but and I'll try to again wrap it up within 10 minutes. But I think
ये दोनों बातें जो ख़ास तौर पे डॉक्टर फरिया ने अभी की एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, और नाजिश ने जो की अबाउट सॉर्ट ऑफ हाउ हमारा जो 3 फॉल्ट लाइन्स उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं हमारी, कि हमारी पॉलिसी जो है वो इमीडिएटिज्म के ऊपर बेस करती है, इट्स वॉइस ऑफ सिटीजन्स जो है वो इक्वल नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर के जो रिफ्रेन्स हैं कि वो पॉलिसी मेकिंग से या पॉलिसी मेकर्स से ख़ास तौर पे दूर रहना चाहते हैं. आई थिंक दीज आर वेरी जेन्युइन कंसर्न्स. बट आई थिंक कि मैं जिन पॉलिसी लेवल के हवाले से बात करूँगा वो 2 किस्म की पॉलिसीज़ के हवाले से, ख़ास तौर पे फिस्कल पॉलिसी है हमारी, यानी कि टैक्स और एक्सपेंडिचर्स की पॉलिसी, और हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके हवाले, उसमें पब्लिक का रोल क्या है. बिकॉज आई थिंक कि जो चीज़ मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो इन पॉलिसीज़ को एज एग्जाम्पल यूज़ करके ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट हो सकती है. एक तो उसमें ख़ास तौर पे जब हम तो सबसे पहले मेरे लिए जो सवाल है, जब मैंने आपने ये सेशन ऑर्गेनाइज़ किया था तब भी हमने आपस में जो डिस्कशन की कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय पब्लिक, राइट. सो इट सीम्स लाइक अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, बट अभी भी हमारे पास 2 नोशंस हैं पब्लिक के जो कि हमें नाजिर साहिबा ने और डॉक्टर फरिया ने हमें प्रोवाइड किया. एक वो पब्लिक है कि यू आर टॉकिंग अबाउट सिटीजन्स इन जनरल, राइट. सो एक नोशन ये है कि सारी की सारी सिटीजनरी जिसमें अमीर और गरीब लोग दोनों शामिल हैं वो हैं. एक नोशन है हमारे पास पब्लिक का जो कि प्रो पुअर है. तो 3 किस्म के नोशंस आ रहे हैं, ठीक है. दे आर ओवरलैपिंग, आई एम नॉट सेइंग दे आर एक्सक्लूसिव, दे आर ओवरलैपिंग. प्रो पुअर इस तरह से हम कह सकते हैं क्योंकि पब्लिक जो है जब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो वो प्रो पुअर क्योंकि गरीबों की इसमें तादाद ज़्यादा है इस मुल्क के अंदर, 60 से 70% आबादी जो है वो गरीब है, इसलिए जो पॉलिसी का एक मोटिव होना चाहिए, जो पॉलिसी की मोटिवेशन होनी चाहिए और उसका फोकस होना चाहिए वो प्रो पुअर होना चाहिए. और तीसरा जो नोशन हमारे पास आया है वो है कि वो पॉलिसी जो है वो प्रो वोटर होनी चाहिए, यानी कि इलेक्शन के टाइम के ऊपर हम ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराते हैं इलेक्टोरल साइकिल्स के वक्त, जिसमें जो रूलिंग पार्टी है या रूलिंग पार्टीज़ हैं उनके वोटर को डायरेक्टली बेनिफिट करे. तो पब्लिक पॉलिसी जो है वो इन 3 नोशंस ऑफ पब्लिक के लिए बनती है. और ये अगेन मैं जैसा दोबारा कहूँ ये कोई एक्सक्लूसिव सर्कल्स नहीं है, दे आर ओवरलैपिंग सर्कल, लेकिन दे आर स्लाइटली जो इनके दरमियान डिस्टिंक्शन है कि जी ये वो इंपॉर्टेंट है, स्लाइटली डिफरेंट नोशंस हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल जब हम स्लाइटली डिफरेंट नोशंस क्यों हैं कि जब हम इन जनरल सिटीजनरी की बात कर रहे हैं तो हम भी कहते हैं कि रियासत की एक जिम्मेदारी है, उसके पीछे मेरे ख्याल में एक आर्गूमेंट ये है कि इट इज़ आंसरेबल टू ईच एंड एवरी सिटीजन इन द कंट्री एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन इन द कंट्री. तो उसमें जब हम प्रो पुअर की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है तो इक्वल सब भी के लिए, लेकिन शायद गरीबों की तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है. हम सोशल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, हम और पॉलिसीज़ की बात करते हैं जो कि उनको फ़ायदे दे सकती हैं. और जब हम प्रो वोटर की बात करते हैं तो या नोशन की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये जो इसमें एक अपॉर्चुनिज्म का भी एंगल है कि वो शायद बातचीत करने में तो प्रो पुअर और प्रो पब्लिक हो, लेकिन अल्टीमेटली उसका मकसद जो है वो अपने अपने वोटर्स को बचाना है. तो उसके अंदर एक अपॉर्चुनिज्म का भी एग्जाम्पल, जो उनको वोट नहीं देते या जो फेंसेस पे बैठे हुए हैं वो अपनी साइड स्विच करके उस पार्टी की तरफ आ जाएं. तो आई थिंक ये डिस्टिंक्शंस जो हैं पब्लिक की ये इंपॉर्टेंट है. अब हमारे पास, और इन डिस्टिंक्शंस को अगर हम जहन में रखें तो फिर हम ये बात जो मैं अपनी सबसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ वो ये कि देखिए पॉलिसी मेकिंग एक्चुअली होती कैसी है. और अगर हम उसमें एक एग्जांपल फिस्कल पॉलिसी ले लें और टैक्स पॉलिसी की उठा के देख लें, जो कि पिछले सेशन में आई वाज होपिंग कि वो टैक्स पॉलिसी की एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग होती कैसे है उसके बारे में बात करें. कि जैसा नाज़िर साहब ने कहा कि हमारे पास तमाम सिटीजन्स की वॉइस इक्वल नहीं है. मैं उसमें क्योंकि मेरा अपने अपने बाइसेस भी हैं, अपने अपने लेंसेज भी हैं, तो मेरा बाइस ये है कि लोगों की वेल्थ एक जैसी नहीं होती. माशरा जो है वो इक्वल सिटीजन्स में नहीं बटा हुआ, माशरा जो है वो मुख्तलिफ किस्म के तबकात के अंदर बटा हुआ होता है, और तबकात के अंदर भी फिर मुख्तलिफ दर्जा बंदियाँ होती हैं. तो हमारे पास जो क्लासेस हैं उनके पास चूँकि वेल्थ की पोजीशन एक जैसी नहीं होती, इसलिए उनकी वॉइस भी एक जैसी. जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है हमें ये मालूम है कि उसकी वॉइस भी ज़्यादा होती है, चाहे हम जो मर्जी बात कह लें कि अच्छा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो बात की बात है. तो जब हमारे पास रियासत ने जब फॉर एग्जांपल टैक्स पॉलिसी बनानी होती है तो वो कहती तो ये है कि वो इन द नेम ऑफ पब्लिक बना रही है, बट इन रियलिटी जब वो बनानी होती है तो वो किस तरह से बनाती है कि वो ये बड़ी कमाल की बात है. शायद और एक चंद ही मुल्क हों जिसमें दुनिया में ये ऐसा होता है. अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहाँ ये ऐसा होता है कि instead of making the policy for the public or for the poor,
कि इस मकसद के लिए कि टैक्स हमने कुछ सर्विसेज डिलीवर करनी है पुअर लोगों को, तो हम उनके लिए एक टैक्स पॉलिसी बनाएंगे। हम जाते हैं उस सेक्टर के पास जिसको हमने टैक्स करना होता है, यानी कि हम शुगर सेक्टर के पास जाते हैं कि आप बताएं हम आपको कैसे टैक्स करें। हम टेक्सटाइल सेक्टर के पास जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि हमें बताएं कि आप कैसे टैक्स करें। और वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं, वो शुगर सेक्टर जो है फॉर एग्जांपल, टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो क्या वो जाके एक बहुत अच्छे लॉयर से जाके बात करेगा उसको, या चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करेगा, उसको हायर करेगा, उसकी एसोसिएशन एप्टमा हायर कर लेगी, शुगर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन हायर कर लेंगे, कोई सब एसोसिएशन है वो हायर कर लेंगे, वो लॉ बनाएंगे और वो लॉ उठा के या तो एफबीआर को दे देंगे या पार्लियामेंट को या गवर्नमेंट को दे देंगे कि उसको एनैक्ट कर दें। अक्सर दफ़ा ये होता है कि वो जो लॉ बनाया होता है वो इतना पेचीदा होता है कि वो एफबीआर को भी समझ में नहीं आता। ये बात भूल जाएं कि एफबीआर जो है वो इस मुल्क में, इस हमारे मुल्क के जो टैक्स मसले मसाइल हैं वो खुद ये बात समझते हैं, उनको खुद भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, ठीक है। और उसकी एक सादी सी वजह है, उसकी वजह ये नहीं है कि वो बुरे लोग हैं या वो कम अकल लोग हैं या वो स्मार्ट नहीं है। दे वेरी स्मार्ट पीपल, दे वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। इट इज़ जस्ट दैट द एरिया ऑन विच दे आर वर्किंग, दे आर नॉट ट्रेन टू डू दैट, दे आर नॉट ट्रेन टू वर्क ऑन टैक्सेस, ठीक है। एक बंदा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि पिछले 30 साल से एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, इंडस्ट्री को बता रहा है कि आपने टैक्स अवॉइड कैसे करना है, बचाना कैसे है, उसके सामने ग्रेड 18, 20, 21, 22 का अफसर कोई भी चीज़ नहीं है, उसकी नॉलेज उसके सामने कोई भी चीज़ नहीं है, वो एक सेकंड में उसको उड़ा के रख देता है। इसी तरह जो लॉयर है बहुत अरसे से काम करे, वो जाते हैं, वो जाके एफबीआर को टैक्स, अब एफबीआर क्या करती है, एफबीआर अब उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें उनको समझ नहीं आती, तो उनको फिर मजीद लॉयर्स और टैक्स एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जाके उन्हीं लोगों से बात करती है जिन्होंने पहले टैक्स पढ़ाया हुआ है। एंड आई एक्चुअली ट्रेस दिस साइकिल एक्चुअली फॉर लिटिल प्रोजेक्ट, वेल फॉर माई PhD, बट मैंने उसमें एक ये प्रोजेक्ट ये ट्रेस किया था किन लोगों ने लॉ बना के दिया और किन लोगों को उन्हीं टैक्सेस, एफबीआर ने उन्हीं को हायर किया टू एक्चुअली हेल्प देम एड्रेस कि ये जो इंडस्ट्री ये बात करी ये कानून के मुताबिक है कि नहीं और हम इनको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इससे ये पता चलता है हमें कि जो टैक्स, जो पॉलिसियां बनाते हैं लोग, हम चाहे हम ये कह लें कि ये पब्लिक के नाम के ऊपर एक्ट करें, वो एक्चुअली पब्लिक के नाम के ऊपर एक्ट नहीं करते, ठीक है। उनका मकसद जो होता है ये तमाम और जिस तरह डॉक्टर फरिया ने भी और मिस नाजिश ने भी हमें बताया कि द स्टेट इज़ एक्चुअली बिसीज्ड बाय स्पेशल इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन ये कोई पाकिस्तान की वाहिद स्टेट नहीं है विच इज़ बिसीज्ड बाय स्पेशल इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट। दुनिया भर में वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। पिछले सेशन में ये बात हो रही है कि एलीट कैप्चर है, पूरी दुनिया में एलीट कैप्चर होता है। किसी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जी अच्छा आप कहें कि एलीट ने कैप्चर, जो अक्सर स्टेट्स हैं, अनलेस अनटिल कोई, अब तो कम्युनिस्ट स्टेट्स भी कोई नहीं रह गई, एक आधी रह गई है, लेकिन वहाँ पे भी एक एलीट इमर्ज कर जाती है। तो यहाँ पे भी जो सारी दुनिया की स्टेट है, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की एलीट जो है वो अपने इमीडिएट बेनिफिट से आगे क्यों नहीं देख पाती, वो क्यों नहीं ऐसी पॉलिसियाँ इनैक्ट कर पाती जिससे लॉन्ग टर्म में उनको फ़ायदा है, सिर्फ शॉर्ट टर्म के अंदर फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हम अभी डॉक्टर फरिया ने बात की कि टैक्स पॉलिसी जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है, मिस नाजिश ने भी बात की 23 मिलियन, आई थिंक जो अपडेटेड फिगर है वो 28 मिलियन तक पहुंच गई है। 28 मिलियन, कुछ तकरीबन 3 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। ये कोई सोचने समझने, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं कि एक पढ़ा लिखा माशरा जो है वो इन द लॉन्ग रन बिजनेसेस के लिए भी अच्छा होगा। एक पढ़ी लिखी लेबर फोर्स मिल जाएगी, लेबर उसको आप ट्रेन कर सकते हैं। इसकी एक बड़ी वाहिद एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सीपैक के अंदर जो बहुत सारी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आई थी, उन्होंने कहा था उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि उनको ट्रेन लेबर पावर नहीं पड़ती। उन्होंने कहा हम कोई ऐसी लेबर पावर नहीं हायर कर सकते जिसको हम मैनुअल दें और उसको पढ़ के वो उसको इम्प्लीमेंट करते। यानी कि आपकी लेबर जो है, जो ब्लू कॉलर लेबर है, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो मैनुअल देख के वो चीज़ें वो मशीनरी को इम्प्लीमेंट कर सके, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सके। उसके ऊपर इन्वेस्टर जो है वो रिलाई कर सके उसकी नॉलेज और एक्सपर्टीज़ के ऊपर और नो-हाउ के ऊपर कि जी अच्छा ये काम कर भी सकते हैं। इन सब बातों में किसी को कन्विंस करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों मुल्क के लिए बेहतर है। ये दीज आर वेरी ऑब्वियस थिंग्स, येट हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकिंग है वो इमीडिएट, सवाल ये है कि क्यों नहीं जा पाती। अच्छा, दूसरी बात मैं ये आई जस्ट क्विकली कम टू दैट, जो दूसरी बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से देख लें कि आप गवर्नमेंट के हमारे पास एक और डॉक्टर फरिया ने जिक्र किया इनइक्वालिटी की क्या है। अब देखें इनइक्वालिटी की जो सोशल प्रोटेक्शन को हम बेसिकली, हमारे पास सोशल प्रोटेक्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की पॉलिसी है। हम ये कहते हैं वो पॉलिसी क्या है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट की जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी है उससे इनइक्वालिटीज़ जनरेट होती हैं। उस जो इनइक्वालिटीज़ जनरेट होती हैं उसकी धार को कम करने के लिए, उसकी काट को कम करने के लिए हम सोशल प्रोटेक्शन लेकर आते हैं।
सो इन जनरल जो हम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, टैक्सिंग, उसमें टैक्स फिस्कल पॉलिसी भी आ गई, मॉनेटरी पॉलिसी भी आ गई, वो बेसिकली माशरे के अंदर इन इक्वालिटीज़ को प्रमोट करते हैं, लेकिन उसको हम कम करने के लिए, उसके असर को कम करने के लिए, उसकी धार और काट को कम करने के लिए हम सोशल प्रोटेक्शन की पॉलिसी, क्योंकि कुछ लोगों को मदद की ज़रूरत होती है, विच इज़ फाइन, आई एम नॉट सेइंग इट शुड नॉट बी हैपन, बट इसका एक कॉन्ट्रडिक्टरी कैरेक्टर है जो कि हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। अच्छा, अब आप देखें कि हमारे यहाँ इनइक्वालिटी की नौयत क्या है। आपके पास जो टॉप 20% ऑफ द हाउस होल्ड्स हैं वो इस मुल्क के 50% GDP के ऊपर काबिज हैं। इस मुल्क का GDP है तकरीबन $300 बिलियन, $150 बिलियन जो है वो टॉप के 20% हाउस होल्ड्स ले जाते हैं। ठीक है, 270 मिलियन के करीब अगर आप आबादी कर लें, एवरेज 6 लोग आप कर लें इसमें, या 224 मिलियन, आसानी के लिए हम 224 मिलियन कर लेते हैं, तो तकरीबन ये बनते हैं 40 मिलियन हाउस होल्ड बनते हैं। टॉप 20% को आप देख लें कि 20% ऑफ द हाउस होल्ड्स कितने बनते हैं, वो कोई $150 बिलियन के ऊपर काबिज हैं। इसी तरह जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, यानी कि जब एक शरह नमो जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, तो तकरीबन 1/4 ऑफ द ग्रोथ, 25% ग्रोथ का हिस्सा जो है वो सिर्फ टॉप 10% हाउस होल्ड जो हैं वो कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। इस मुल्क के अंदर इट पेज टू ओन कैपिटल रादर देन इट पेज टू ओन टू गेट ट्रेन एंड वर्क इन द लेबर मार्केट। वो किस तरह से हमें पता चलता है कि इस माशरे, इस मुल्क के अंदर जब GDP का डिवाइड करते हैं कैपिटल शेयर में, उसका शेयर ऑफ कैपिटल और शेयर ऑफ लेबर इनकम, तो लेबर इनकम का शेयर जो है वो तकरीबन 45 से 50% तक है, और बल्कि 50% जो है वो सिर्फ कैपिटल ओनर को चला जाता है। ठीक है, जो जिन ममालिक के अंदर जो एक्चुअली प्रो पब्लिक ममालिक हैं, जैसा आप कह लें जहाँ पे वेलफेयर सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे जो लेबर शेयर का इनकम है वो तकरीबन 70% तक, 65-70% होता है। जर्मनी है, स्वीडन है, इस तरह के और ममालिक हैं जहाँ पे वेलफेयर निज़ाम स्ट्रांग है। तो हमारे पास जब गवर्नमेंट डेफिसिट स्पेंडिंग करती है ग्रोथ के लिए, जब एवरी टाइम गवर्नमेंट स्पेंड्स इट टर्न्स इनटू समबडीज इनकम। गवर्नमेंट जाके कोई मतलब मनोसलवा तो नहीं दरख्तों पे लगा होता है, जाके तोड़ लेती है और लोगों को जाके देती है, उसको प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं, उसको पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो एवरी टाइम गवर्नमेंट स्पेंड करेगी अपनी पॉलिसी के तहत कि हमने इकोनॉमी को प्रमोट ग्रोथ करनी है, तो इसके अंदर जो पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी है हमारी, वो प्रो ग्रोथ है। इसमें हम डेफिसिट स्पेंडिंग करेंगे, जितनी दफ़ा वो स्पेंड करेंगे वो किसी की इनकम बन जाएगी, और उस इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो नई इनकम बनती है, वो हमारे यहाँ ऑलरेडी अमीर तबके जो हैं वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो आप कहे तो जो मर्जी लें कि जी अच्छा ये गुरु हमने जो अपनी पॉलिसी बनाई है वो प्रो पुअर है, वो गरीबों को फ़ायदा देगी, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में उसको गरीब उससे फ़ायदा नहीं हासिल कर पाते। अच्छा, ये भी कोई अनहोनी सूरत हाल नहीं है, पूरी दुनिया में होता है, लेकिन पूरी दुनिया में इसका तोड़ क्या है कि अमीर लोग जो हैं फिर अपनी इनकम को टैक्स कर लेते हैं, और वो गरीबों के लिए एक वेलफेयर सिस्टम जो है, जिनके पास नहीं है, जिनकी मदद की ज़रूरत है, उसके लिए एक वेलफेयर सिस्टम। सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी की ओरिएंटेशन ये क्यों नहीं हो सकती कि हम के गरीब अमीर लोग खुद अपने आप को टैक्स कर लें। ये कोई अनहोनी सी बात नहीं है, दुनिया में बेशुमार ममालिक में इसमें काम हुआ है, और ऐसे ममालिक में इसी तरह से हुआ है जहाँ पे पहले कभी नहीं होता था और फिर मुल्कों में किया। ठीक है, हिंदुस्तान में ये काम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक ना, हमने साथ वाले मुल्क की बात ही कर लेते हैं ना। मैं को बहुत लंबी चौड़ी, मैं आपको जर्मनी की मिसाल नहीं दे रहा, नॉर्वे की मिसाल नहीं दे रहा, हिंदुस्तान के अंदर आपको एविडेंस ऐसा मिल जाता है कि वहाँ पे ये काम उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू किया। कितनी कामयाबी से करेंगे ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमसे तो बेहतर कर रहे हैं, ये बात सोचने की है। तो ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ये काम नहीं हो सकता? अनफॉर्चुनेटली मेरे पास भी इसका कोई सवाल का जवाब नहीं है। ये सवाल मुझे बहुत बॉदर करता है, बट आई रियली डोंट हैव एनी आंसर टू दिस क्वेश्चन। But I think when we have to think about public policy, we have to think about the things that Dr. Fariha Armagan and Ms. Nazir Afraj told us, but I think we also need to think about what is it in our elite, in the rich in this country, that makes them so short-sighted कि वो immediate benefit से आगे सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। Sorry, I'll just end here. I hope I've said something useful. डॉक्टर फरिया से मेरा सवाल है दैट आई वांट टू स्टार्ट विद। फ़हद ने भी जो है वो डेफिसिट स्पेंडिंग की बात की, नाजिश ने भी बात की अबाउट हाउ पब्लिक सेक्टर बोरोइंग इज़ क्राउडिंग आउट द प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग, नाजिश ने भी इसका जिक्र किया। तो डॉक्टर फरिया, इज़ दिस रियली द केस? इज़ पब्लिक सेक्टर, जो सवाल है कि क्या प्राइवेट सेक्टर को क्यों क्रेडिट नहीं मिल रहा, इज़ दिस रियली बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, और इज़ दिस बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर सिंपली डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री?
because we see instances, हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं दुनिया में where interest rates are where the public sector borrowing and spending actually crowds in the private sector. और regardless of how high interest rates are, private sector जो है वो borrow करता है banks से because it expects high returns. So ना private sector को high interest rates bother करते हैं, ना government की spending bother करती है, बल्कि government की borrowing और spending private sector को encourage करती है. So perhaps you can talk a little bit about this. So deficit financing, it has always been there, लेकिन अगर just like to put it in a storyline, at the very inception of the millennium, it got aggravated. अभी right now, nearly 80% of domestic borrowing is by the government. और आप इसकी intensity देख लें कि तक कितनी high percentage है. Actually, at the inception of the millennium, there were multiple crises that Pakistan was facing, और उसमें of course budget deficit भी एक issue था. और उसमें जो हमारा commercial banking sector है, which is which actually saw rapid growth. It operates under monopolistic competition. It reaped supernormal profits for decades. So they were facing issues with credit risk because of these energy crises and circular debt and all this, and also the non-performing loans of the industries, because textile industry, one of our major mother of manufacturing sector industries, they were hardly hit due to energy crisis. So they entered into this phenomena where they kept on investing in risk-free securities like T-bills, government bonds, PIB, FIBs, just to minimize their credit risk and to ensure that their credit is safe by borrowing it to the government. And again, of course, there's guarantee by the sovereign, and so there was a bit of this alliance where the whole movement of credit majorly was to government, and there was huge crowding out of private sector and especially enterprises. The thing that we have to understand, that in a country like Pakistan, when we talk about financial industry, it is primarily our commercial banking sector which has the ability and the capacity for the financial inclusion of not only individuals but also of enterprises. I mean, essentially, our banking sector, commercial banking sector, is the gatekeeper of financial inclusion for both individuals and enterprises. और जब ये phenomena 20 साल पहले start हुआ, rather aggravate हुआ, तो what happened was कि जो enterprise sector था, they started excluding themselves. This is a two-way process. It's not when you are not offering credit or loan or not devising financial products and services for your clientele. So they also operate in this manner that they themselves exclude out of the system for the reason that they are not getting the due products and services or the portfolio that is needed. Or abhi, we can definitely witness this in our micro enterprises and our small enterprises, especially if you go to KP, or especially when you see the informal enterprises as well, that they are more willing to go to loan sharks. They're actually raising this credit from relatives and friends from informal means rather than going to financial industry or some financial actor. So this is more like a voluntary financial exclusion that is setting in. And again, on the parallel side, there's super inclusion of government in terms of gaining credit, and super inclusion of course, certain giants for whom the portfolio was already skewed over the decades, certain industry giants. So we need to see this because अगर हम monetary disorder की बात करें, तो जो backbone है वो हमारी enterprises हैं, especially the small enterprises. और अभी what is happening, अभी जो इतना high interest rate जा रहा है कि private sector is actually shedding credit. So वो जो win-win situation है, जिसका आपने जिक्र किया, कि ऐसा credit government financing that loops in the very same private sector and they are also the beneficiaries, that is not actually happening. There's averseness to credit which is setting in for our enterprises. I did a couple of surveys in Punjab and KP, and the main response that I got from the micro entrepreneurs and small entrepreneurs was that we are much fine raising the credits by informal means, by our own self rather than going to financial institutions. Or उसमें भी फिर there's another problem of industry responsive line of credit or industry responsive products. I mean, how they are made
they're not tailor-made for, especially when we talk about small enterprises or micro enterprises. So this is a huge issue क्योंकि यही है जहाँ से सारी जो rigor आनी है towards growth or to actually coming out of these poly crisis we are facing. Thank you, Dr. Priya. That gives me a lot to think about because ये मेरा अपना एक area of interest है and this gives me a lot to think about. मेरा अगला सवाल जो है वो नाजिश और फहद दोनों से है. Perhaps you can answer this question one by one. Nazish, you first and then Fahad. My question is, and then we will open up questions for the audience because मैं audience को time ज़रूर देना चाहता हूँ. My question is that ये जो elections, accountability, elite capture, इनकी जब हम बात करते हैं, then if the elite will not look past its own interests, तो फिर जो elite के पास पावर है and this locus of power के पावर सिस्टम में है किधर, हमें इस पावर को जो मुझे नज़र आता है, this locus और center of power must then shift अगर और कुछ नहीं चेंज होगा. तो फिर मेरा सवाल आप दोनों से ये है कि is this something which is feasible, conceivable, how might this happen? So perhaps you can address this. Thank you, Daniel. It's a really, I think it's a difficult question. But जैसे फहद ने भी कहा, it's not like it's unheard of, right? Other countries have seen that shift. It has been done. और voluntarily कोई अपना power उठाकर नहीं देता. Voluntarily nobody says I have this really cushy space where I don't need to work very hard and I'm still making good money, but let me like voluntarily give it up. It doesn't happen. And उसी टाइम हम लोग जब देख रहे हैं, where I spoke about how politicians and bureaucrats have like private incentives also, and then all of that story that plays out. This is why systems are very important. जब आपके systems in place होते हैं that put those checks and balances and that accountability in, those are the things that keep people from not taking advantage of the situation. वरना जब wherever there's an opportunity to be had, it will be had. So it's harder work. उसका कोई easy हल नहीं है, but it doesn't mean कि आपने perfectly overnight systems को reform करना है. अगर आप चाइना का देखें, very interesting book on Chinese institutions and that how that evolved. It says कि corruption तो उधर भी बहुत थी, but that growth also happens at the same time. And what happened is that there was money to be made. अभी आपने अभी इससे पहले जब फरिया का सवाल से किया था, that question was that when there is money to be made, then firms find a way around all of the other issues. Regulatory obstacles जिनका मैंने भी जिक्र किया था, those are not insurmountable issues. They are not a problem for firms. If there is money to be made, they will do all of that. The issue is कि इस वक्त हमारी economy competitive नहीं है. Our basic factors of production जो land, labor, energy, जो basics होती हैं, हमारी market size goes in our favors, but the other things don't. And then of course the systems का issue. So I think that combination, and it doesn't have to be a complete overhaul. I think little shifts when they start happening, and your little pockets of success start happening, तो उससे virtuous cycles आपकी create होती हैं. So, but yeah, I don't have a, it's a difficult question. I don't have like a single answer for it. Thank you. Thank you. I think the point of talking about this was that we don't have ready-made answers in many cases, and hopefully we get some ideas. Fahad, what do you think? Yeah, I think I would just end up echoing what Ms. Nazish just said. I think, if I go slightly beyond that, I think there is a slight shift in the locus of power. Okay, it is happening but it is also happening it is happening in a disorganized manner as well. Okay, so locus किस तरह से shift हो रहा है कि आपकी demographics जो है वो बहुत rapidly change हो गई हैं पिछले 20-30 सालों के अंदर. Okay, so if you say that 75% of the country is less than 35 years old, I mean 75% of the country, it's मेरे जो अभी भी unimaginable मुझे लगता है कि 75% of the country is younger than I am, right? So it's and I'm what, 45, so it's I'm not, I don't, इतने यंग कंट्री के अंदर, ठीक है, तो उसमें इतने नए वोटर्स आ रहे हैं, और अगर ये नए वोटर्स आ रहे हैं और नए डिसइनफ्रेंचाइज्ड वोटर्स भी आ रहे हैं. आई मीन व्हाट you pointed out earlier that we have one of the lowest
वोटिंग रेशोज इन द वर्ल्ड, वोटर्स पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड, तो वो ये कोई दोनों चीज़ें कोई बहुत हेल्दी नहीं है. आई मीन यू नो एज पीपल कम ऑफ एज, you know, the number of disenfranchised voters or disheartened voices also increasing at the same time, and we don't have a way to address their concerns. ठीक है, तो ये एक जो शिफ्ट हो रहा है लोकस के अंदर वो ये कि जो नए वोटर्स आ रहे हैं वो पुरानी पार्टीज़ को दे आर नॉट अलाइंड विद दोज पार्टीज़. वी कीप टॉकिंग अबाउट इट, मे बी नेक्स्ट इलेक्शन में कुछ पता चल जाएगा कि हमें वो अलाइनमेंट कैसे हुई है, बट उसके लिए इलेक्शंस का फ्री एंड फेयर होना भी बहुत ज़रूरी है. तो हमारे पास लेकिन जो शिफ्ट आ रहा है उसके अंदर अगर उसको वॉइस नहीं मिलती तो उसमें एंगर और उसके अंदर रिएक्टिव पॉलिटिक्स की स्पेस ज़्यादा बढ़ जाएगी बनिस्बत किसी थॉटफुल ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स की बेस बढ़ने से. अच्छा, अब ये शिफ्ट कैसे चेंज हो सकता है? देखिए, मुझे यही हो सकता है कि जी अच्छा सिटीजन्स ने, वोटर्स ने डिसाइड किया आहिस्ता आहिस्ता कि जी अच्छा वी नीड टू हैव a different kind of system in place as well, because the current system is not really working for us. I think एक बहुत strong basis exist करता है कि citizens in general demand करें कि हमारे पास एक strong local government system होना चाहिए. उसके बगैर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पे, हम अपनी ज़िंदगी everyday life को बेहतर तौर पे नहीं गुजार सकते. मतलब घर के पास से कूड़ा करकट नहीं उठता, घर के पास जो है वो स्कूल जाने के लिए या कॉलेज जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, घर के पास कोई डिस्पेंसरी और अस्पताल नहीं है. ये एवरीडे ये ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं. घर के पास पार्क अवेलेबल नहीं है जहाँ पे बच्चे जाके खेल सकें और लोग जाके टाइम स्पेंड कर सकें. ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं. ज़िंदगी हमने सिर्फ घरों के अंदर कैद रह के नहीं गुजारनी, उसके बाहर भी ज़िंदगी गुजारनी है. तो ये अब ज़िंदगी गुजारना इस मुल्क के अंदर इस कमी की वजह से बहुत मुश्किल हो गई है. तो एक बात तो मेरे ख्याल में जो शिफ्ट कर सकता है वो ये कर सकता है कि जी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट को डिमांड किया जाए. कब हमारी सिटीजनरी, अगेन वो $1 million क्वेश्चन यही है कि जी अच्छा ये कब हो पाएगा, आई डोंट नो. लेकिन जब तक हम ये डिमांड नहीं करेंगे तो कुछ होगा भी नहीं. तो वो एक चिकन एंड एग क्वेश्चन बन गया है कि क्या चीज़ पहले करें. लोकल गवर्नमेंट पहले आए, उसको बेहतर पहले बनाएं, या हम पहले डिमांड करें और लोकल गवर्नमेंट आ जाए. और अगेन वो चिकन एंड एग सवाल यही होता है कि वो डायलेक्टिकल सवाल होता है. उसमें हम पहले या बात की बात नहीं होती, वो दोनों सवाल एक साथ ही उठाने पड़ते हैं. थैंक यू फाद. वी विल नाउ टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस. जो अशर्स मौजूद हैं विद द माइक, अगर आप प्लीज़ माइक दे दीजिए. थैंक यू सो मच. इज इट ऑडिबल नाउ? जी जी. अच्छा, ठीक है. सो इट्स मैक्रो फीटिशिज्म व्हाट आई वुड कॉल, कि अभी आप लोगों ने एविडेंस पे बात की, आप लोगों ने डेटा पे बात की, तो इट्स ऑल अबाउट वो चंद मैक्रो नंबर है. वो पब्लिक पॉलिसी जितनी है वो उस पर यह है कि जी फिस्कल पॉलिसी क्या है, टैक्स एक्सपेंडिचर क्या है, कितना टैक्स हमने इकट्ठा करना है, किधर लगाना है, कितनी रोड्स बनानी है. इससे ज़्यादा हमारी कोई पब्लिक पॉलिसी या पॉलिसी इकनॉमिक पॉलिसी नहीं है. एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट. इकनॉमिक पॉलिसी जो है आपके कोई या एक्सपर्ट्स या आपके अवाम या उनका इनपुट जो है उसमें वो नहीं होता. आप मिसाल मैं देता हूँ कि आप प्रोविंसेस में क्वेश्चंस फॉर द पैनलिस्ट. थैंक यू. ऑब्जर्वेशन 1 मिनट दे देंगे जल्दी से. तो आप यहाँ पे मिसाल मैं देता हूँ, प्रोविंसेस में चीफ इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो PES का ग्रेड 18 का बंदा होगा. ही इज चीफ इकोनॉमिस्ट, वो पॉलिसी बना रहा है, उसने कभी ज़िंदगी में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होगी. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ मच डिसकनेक्टेड. फिर एक लास्ट चीज़ देखें, मैडम नाज़िर शफनाज ने बात की, शायद आपने की थी क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाली, कि हम लोगों की क्वालिटी, हम लोगों का सारा जोर होता है कि क्वांटिटी आउट शायद आपने की थी आउटपुट पे होता है, बट नॉट ऑन कि जी अब एक विद ए स्ट्रोक ऑफ पेन अभी हमने 24 यूनिवर्सिटियाँ मज़ीद कायम कर दी हैं. लेकिन इससे सवाल ये है कि वो जो पहले से यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें से क्या निकल रहा है, क्या आज तक हमने ये पूछा. सो रियली दीज आर द क्वेश्चन, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी एंड मैक्रो फेटिशिज्म एंड हु मेक्स द पॉलिसीज. इट्स द ब्यूरोक्रेसी एंड अदर्स. ठीक है सर. So that's how disconnected we are. Thank you. Let's take 1 or 2 more questions and then we can see who would like from the audience to answer. जी. Okay. मंजूर अहमद मेरा नाम है. Panelists, I think तीनों का point यही था कि policy making is very faulty generally. For example, नाजिश ने शुगर इंडस्ट्री की एग्जांपल दी कि politicians, और फिर बहुत सारी डिस्कशन हुई इस पे, टैक्स पे. Having worked in FBR for many years, I agree with that. One of the reasons is कि उधर conflict of interest है. अगर member income tax है ना, तो उसको अपनी productivity दिखाने या उसको अपनी performance दिखाने के लिए उसको दिखाना होता है कितना revenue उसने बढ़ाया. इस तरह member customs इस तरह
पहली बात तो इमीडिएटली इनसे मेरा ख्याल है कि ये कोई और तरीका होना चाहिए, लेकिन आई डोंट फाइंड, आप लोगों ने भी किसी ने बताया नहीं कि और क्या तरीका। हमारा एकेडेमिया कुछ हेल्प कर सकता है, नहीं एकेडेमिया कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वास्ट मेजॉरिटी जो मेरी अपना परसेप्शन है, दे आर स्टिल स्टक इन द 1980s। वही कहते हैं जी हमारा लोकलाइजेशन, वो जो सारी दुनिया मूव्ड ऑन, लेकिन हमारे वही एग्जैक्टली कभी वो नहीं बात करते कि कुछ हम ग्लोबल इंटीग्रेशन की तरफ जाएं, रीजनल उसकी तरफ जाएं। इस तरह के नहीं है। एक पैट्रियोटिज्म जो इस कंट्री में इस तरह हो गई है कि नहीं जी अगर हर चीज़ लोकली बनेगी तो फिर ठीक होगा, अगर नहीं होगा तो ये तो आई वांटेड मे बी समबडी कुड सजेस्ट कि और कौन सा तरीका है। अगर पॉलिटिशियंस नहीं है, अगर ब्यूरोक्रेट्स नहीं है और एकेडेमिया नहीं है, तो हु एल्स शुड कम अप विद सम पॉलिसीज। थैंक यू मंसूर साहब। प्लीज कैन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम somebody, वन ऑफ द students, please, अगर कोई हैं। Okay, so I'll speak without mic. My voice is very loud, and I feel a bit irritated when I have this thing in my hand. Okay. Can you hold it for me? So I was motivated to know the problem which I was already having this set of problem, and I was particularly here to know the set of solutions, knowing that the audience, it was sponsored by LUMS, and I was having a lot of expectation. Now that I'm clueless again, I entered with a clueless mind and I'm going out with a clueless mind. So I may quickly suggest something, maybe I recommend something through LUMS that maybe they should formulate, not like promote or educate certain policies. And we need a system approach. So what we need to do is to have a set of problems, and then we know all these problems are interconnected, and we know that there are unintended consequences of it. So maybe this is the right platform for LUMS. Maybe they should advocate a certain policy statement, and it will be very useful, because all these brilliant minds go wasted when they don't work together. So this was just a short comment. थैंक यू। सर थैंक यू। पहले कि मैं और 2-3 सवाल लूँ सर, मुझे प्लीज़ मौका दीजिए पैनलिस्ट को। whoever would like to respond, please feel free to go ahead. Anybody, any one of you, to the things that have been said. हमारे पास तकरीबन 5 मिनट हैं before we have to let other people into the room for the next session. So, okay, let's take a few more questions. Hello, I'm Samia from PIDE. So मेरा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात की गई है, तो केपी में स्टूडेंट इनरोलमेंट को प्राइमरी लेवल पे इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट जो पॉलिसी दी है कि उनको पर मंथ 2000 रुपीज़ का इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन अगर हम देखें तो जो पेरेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स को जस्ट उन डेज़ में स्कूल्स भेजते हैं जब वो उनको कैश मिलना होता है। इसके अलावा पूरे मंथ वो स्टूडेंट्स नहीं जाते। तो इनरोलमेंट तो इंक्रीज़ हुई है लेकिन उनकी अटेंडेंस नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि प्रॉब्लम जो है वो पब्लिक की पॉलिसी में है या हाउस होल्ड को हम ब्लेम करें इसके लिए? प्लीज़ जी अगेन आपने जो आइडेंटिफाई किया है वो एक पिलर आइडेंटिफाई किया है जो वीक है पॉलिसी मेकिंग में। सो पब्लिक पॉलिसी इज़ वेरी सिस्टमैटिक इन नेचर, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट लॉन्चिंग एन इंटरवेंशन एंड जस्ट रोलिंग इट आउट एंड देन वेटिंग फॉर द इंटेंडेड रिजल्ट्स। दिस अ होल M&E फ्रेमवर्क दैट कम्स इन, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फॉलो किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन वाइज भी, लेकिन इट्स अ वीक फ्रेमवर्क। So again, the policy needs to be holistic. They have to understand कि demand side पे ये issue है, ये weakness है कि the cash incentive is primarily it is enabling these people to send their children to school, लेकिन जो motive है उसके पीछे real time education का that is not the priority. तो यहाँ पे M&E framework और policy design इतना holistic होना चाहिए in terms of outreach, in terms of dissemination, in terms of awareness of the parents, and then again their ability to communicate with school or their child in terms of education. So that's part of the huge part कि M&E framework strong हो. Policy design must be very systematic. It has to be very, there are no silver bullets in public policy. Actually it is the systematic policy framework जिसमें testing, refining and M&E का भी equal role है. So expecting that a rollout policy will take place and that's going to actually do magic, that is quite not real scenario.
Daniel, I'll respond a bit briefly to some of the, the comments. एक तो ये है कि the systems I also spoke about जो आपने का problems का तो निशान दी कि actually I think part of it had to do also with the way that the question was framed and solutions के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा time नहीं spend किया, although I talked about accountability and systems and I think Fahad built on that and also spoke about local government कि हम लोगों की जब 18th amendment हुई 2010 में that devolution process has not been fully completed. So हमारी local governments इस वक्त उनमें accountability, empowerment, frequent elections, all of that is not done. So I think that would go a long way in sort of transmitting that voice of public and the holding of accountability. For me that's very important. I think जो systems की मंजूर साहब ने भी ये बात की कि if not politicians, if not bureaucrats, असल में तो politicians और bureaucrats नहीं करना है. As academia we have been supporting and we've been involved in policy making. Fariha and I are both involved in evidence-based policy making. हम लोग पढ़ाते भी हैं bureaucrats को और हम लोग वो processes put in place भी करते हैं. So policies बन जाती हैं. मैंने जैसे when I spoke in my section कि policies बहुत हैं, shelves पे shelves भरे में, everybody knows what has to be done, मगर implementation का challenge है, and for that we need to work on the systems and the incentives of bureaucrats. And उसकी I'll tell you two sort of interesting things that I'm thinking about. बाकी there's a lot that has been spoken about it already. एक तो ये है that in that China book that I referred to earlier, the incentives of the bureaucrats were directly aligned with the incentives of investors. So जो एक investment आती थी into that local government, a portion of it was explicitly shared with all of the departments that were enablers. So what she documents in that book is कि the kind of attitude that the bureaucrats had was कि खुदा के बाद एक investor है. That's how important it is. The investor is super important for us. That when that alignment of incentives happened, investment started coming in, even though there were some parts of the payments were formal and some parts were informal, which is also rent seeking, it could be corruption, but the alignment was such that it happened in place. जहाँ पे हमारा इस वक्त जो bureaucrats का attitude है, that is still very colonial mindset से अभी वो निकले नहीं, it's very very rent seeking. And एक तरह से आप देखेंगे अखबारों में भी आता है कि there is the money making, the businessman is either criminalized या लोगों की expectations business से ऐसी होती हैं कि ये लोग ये क्यों नहीं कर लेते, इनको ये करना चाहिए. Businesses will only do what makes sense. They're there to make money. They're not social service institutions, right? So, एक तो ये the other thing that I'm thinking about, and this is just food for thought. It's very, it's not. It hasn't really been fully tested. Is the use of nudges, which is behavioral insights, and these are nudges which help tap into intrinsic motivation. एक extrinsic motivation होती है कि आप financial rewards के साथ करो या उन चीज़ों के साथ करो, and there have been some studies that show that just having that kind of feedback, उसके ऊपर action चाहे ना लें, आप bureaucrats को feedback दें कि उन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ कितनी बेहतर की और कितनी ख़राब की. Just receiving that itself makes you more conscious, it makes you inherently motivated. Or having it very clearly articulated कि your mandate is to serve the public. इस वक्त तो अगर आप देखें कि हमारी regulators के अगर आप core mandate को देखें, the mandate में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इस तरह regulate करें that you meet your regulatory objectives, but at the same time you don't completely stifle the business. It should be done in a way that you don't impose, extra unnecessary kind of costs on businesses. अभी तो हमारी वो mandate के अंदर ही इस तरह की language नहीं है. So naturally, आपका your motivation as a regulator is just कि बिल्कुल blindly वो सिर्फ ये देखते हैं हर हालत में क्यों होना है. हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी की, I don't want to take up too much लास्ट में, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी की अगर आप देख लें फॉर एग्जांपल कि that raid and seal approach, right? वो raid and seal approach क्या है कि आप उधर जाते हो, आप बहुत you make a big show of it और आपको बहुत वाह probably बाद में होती कि हाँ बहुत अच्छा उन्होंने raid किया, seal किया. अब the restaurant which has
been the recipient of that has actually faced a very large reputational hazard. Ab the case may or may not have been even real or true. Many of them, restaurants will say, ki, but we were not even warned. We didn't even have, a list of things that we were meant to conform to before this raid and seal happened, right? So, ये जो systems की reform है, वो बहुत बड़ी systems की reform की ज़रूरत नहीं है. Even little things like these nudges, these mandates, these SOPs कि आपने raid and seal करने से पहले क्या कुछ करना है, even those things can really make a difference. But yeah, I'll end here. Thank you. Thank you. Fahad, do you want to quickly take just a minute or two to wrap up? This will be the end of the session. Sure. We must make room for the next panel. Sure. देखिए I'm sorry, this doesn't sound like a next big idea, but I'm actually quite convinced on this. आपको देखिए आप हमें इस मुल्क के अंदर अगर कुछ निज़ाम थोड़ा सा सही तरह चलाना है ना, तो हमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा. अभी ये जो क्वेश्चन आया, ये एसेंशली क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स के वालिदैन जो हैं वो पैसे ले लेते हैं और सिर्फ उस वक्त बच्चे को भेजते हैं जब उन्होंने वो स्कूल में पैसे मिलने होते हैं, उसके अलावा नहीं भेजते. अब ये एसेंशली मॉनिटरी, एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट डॉक्टर फरीहा ऑल्सो पॉइंटेड आउट, ये मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन का क्वेश्चन है. किसी को आपने कोई इंटरेस्ट ग्रुप बनाना है या कोई सेक्शन बनाना है सोसाइटी का जो कि इस चीज़ को मॉनिटर कर सके स्कूल के लेवल के ऊपर. अब स्कूल मोहल्ले में बना हुआ है ना किसी लोकल उसके अंदर, तो वहाँ पे ये मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन कौन कर सकता है? आपके लोकल इलेक्टेड नुमाइंदे कर सकते हैं. ठीक है, वो वही लोग होंगे जो आपके आसपास के गरीब मोहल्लों में रहते हैं. वो कोई गवर्नमेंट का कहीं दूर से उठ के कोई ब्यूरोक्रेट उठ के नहीं आएगा, ना फेडरल गवर्नमेंट का ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, बल्कि उसी इलाके के जो लोग हैं ये वही उसको मॉनिटर कर सकते हैं. यही चीज़ें जो है हमें सबसे बड़ा मसला जो एक बहुत सारा आ रहा है कि जी अच्छा हम अभी तक इतने साल हो गए हैं, अभी तक हम पोलियो को एरेडिकेट नहीं कर सके क्योंकि उसकी इन्फोर्समेंट हम लोकल लेवल तक नहीं लेके जाते. हम टीमें भेज देते हैं जिनको पता नहीं है इलाकों में क्या कुछ मसले हैं. हर इलाके के अंदर ऐसे घर यकीनन जहाँ पे पोलियो के कतरे नहीं लगवाए जा रहे हैं वहाँ पर यकीनन ऐसे घर भी मौजूद होंगे जो कि पोलियो के कतरे लगवाते हैं. वाई कांट वी एक्चुअली सेट अप ए लोकल मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन यूनिट दैट सी के जी अच्छा कौन पोलियो के कतरे पिला रहा है, कौन नहीं पिला रहा है, उसका कोई लोकल लेवल के ऊपर गली मोहल्ले के लेवल के ऊपर ही कोई सोल्यूशन लेकर आए. हमें वो सोल्यूशन इस्लामाबाद में या पेशावर में या कराची में या लाहौर में बैठ के या कोयटा में बैठ के क्यों सोचना है? तो ये जब तक हम डेवल्यूशन नहीं करेंगे, बहुत सारे जो मसले जो हमें जो ऑब्वियस मसले रखते हैं उसके ऊपर हम उनका हल जिनका ऑब्वियस लगता है वो हम सारी गुजारते रहेंगे. ठीक है, अब ये किस तरह से करना है, यही मेरे ख्याल में मैं उस सवाल को मैं अनआंसर्ड, आई एम सॉरी, दोबारा छोड़ के जा रहा हूँ कि लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पे किस तरह से इंट्रोड्यूस करना है. दैट इज़ द $1 million क्वेश्चन, और वो क्यों नहीं हो पा रहा है उसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है. Sir, thank you to my panelists for being here, for making your way to Islamabad for this panel. Thank you to everybody who attended. आपका बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों के मैं सवाल नहीं ले सका और नहीं सुन सका, मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ. I will make myself available outside the hall. I will be present अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहें. Although I don't know if I can answer your questions as well as my panelists. So thank you very much once again, and thank you to PIDE, and my apologies to the next panel for going over time. Thank you everybody.